तो अभी जितने भी लोग जस्ट एज अगर हमें हार्ट डिजीज ट्रीट करना है तो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हार्ट नहीं है? हार्ट का पेशेंट आया तो पहले ही विड्रॉल कर लेते, रिजाइन कर लेते कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे करेंगे, कुछ हुआ तो। दीज आर द क्वेश्चंस जब भी हम कोई हार्ट का पेशेंट देखते हैं। ओके, इको साउंड हो रहा है, मैंने 1 मिनट। यस, सो जब भी कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट आता है तो ये क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं। फिर पेशेंट का बर्डन है ना, पेशेंट का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, तो ये सब बातों को अवॉइड करने के लिए यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट हार्ट, about the function of heart, its conflicts and the approach. So today we will take all these things. So let's start the topic heart. Yes. So in this topic, I will show you or I will treat what is hypertension, what is circulatory system and its pathophysiology, what are the effects of high blood pressure on the organs of the body, circulatory system and homeopathy, homeopathic relations and understanding, hypertension and their solution in homeopathy, homeopathically miasmatic concept for hypertension, complications of hypertension and their homeopathic solutions, conflict study in hypertension and rubrics, and approach in hypertension. So I will take hypertension in detail and the conflict related to heart, the part of heart. Yes, तो हार्ट के जितने भी पार्ट है उसके अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो कौन से पार्ट का क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये सब हम डिटेल में देखेंगे। यस, सो तो हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन से, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। सो हाई ब्लड प्रेशर इट इज आल्सो नोन एज hypertension, blood pressure, high blood pressure and low blood pressure. So blood pressure is the force of blood. Blood pressure is the force of blood. अभी भी साउंड आ रहा है आप लोगों को? नो सर। नो सर, क्लियर है। एयर का साउंड आ रहा है क्या? एयर का साउंड नहीं, ओके क्लियर है सर अभी। ओके। सो हाइपरटेंशन इट इज blood pressure is the force of
blood passing against the wall of arteries. Yes. So what is blood pressure, hypertension? ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है एक्चुअली? ब्लड आर्टरीज में क्या होता है? सो प्रेशर इज द फोर्स, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड, फोर्स ऑफ ब्लड, ब्लड कितनी फोर्स से फ्लो हो रहा है, फोर्स ऑफ ब्लड एंड प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। तो आर्टरी के ऊपर जो ब्लड फ्लो होता है उसका जो प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। सो there is acute hypertension and chronic hypertension. So acute hypertension, it is mostly the soric. When the systolic blood pressure is increases suddenly, physiology. So systolic blood pressure बढ़ गया, मतलब generally the normal blood pressure is 120 to 80, but 120 it is systolic, 80 it is diastolic. So 120 becomes high, that is become 160 or 170 or 180. So it is suddenly rise systolic blood pressure, और जो suddenly rise हुआ, it is a physiological. Why? Because it don't have any pathology. कुछ तभी ऐसा फैक्टर आया जिसकी वजह से ये सडन राइज हो गया, एंड दिस इज एक्यूट. So it is mostly the soric blood pressure because of anxiety. It may be because of anxiety, tension, stress. That's why it is acute and soric. When the diastolic BP decreases, when the diastolic BP increases gradually, it is pathology. For example, atherosclerotic plaques, etc. जब भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बट इट विल ऑलवेज increase slowly. Why slowly? Because of the atherosclerotic changes in the arteries. धीरे धीरे वहां कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, then the artery lumen become narrow and the pressure of arteries blood flow increases. So this is psychotic, it is chronic. So physiological BP increase usually seen in the menopausal woman. Yes, physiological, because it is temporary in menopausal women. क्योंकि मेनोपॉज जितने दिन तक रहेगा, ऑटोमेटिकली उसमें एंजाइटी बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड दैट आर ऑल रिवर्सिबल. दैट्स व्हाई इट इज फिजियोलॉजिकल. Systolic BP increases suddenly. Systolic BP increases, it is suddenly. It's usually physiological. Yes. These are due to structural changes taken. Psychotic blood pressure. Psychotic blood pressure, these are due to structural changes taken place in the blood vessels as secondary defense mechanism like atherosclerosis, induration, or thickening of arteries. So you can see here, see the atherosclerotic changes, atherosclerosis in the lumen of the artery. That's why the artery become narrow inside and the pressure of flow of blood increases. Yes, so accumulation, that is psychosis. So the chronic blood pressure, chronic hypertension because of the induration, atherosclerosis, and thickening of arteries is psychotic. And the syphilitic hypertension,
syphilitic hypertension, mostly the ये जो साइकोटिक ब्लड प्रेशर है बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस और इंड्यूरेशन और थिकनिंग, ये कैसा रहेगा? तो 140 90 100 सॉरी 150 160 90 150 90 170 100, this is psychotic blood pressure. But when this blood pressure becomes high, out of control, like 200 or 210 or 220 by 120, 130, that means systolic blood pressure becomes above 20, or above 200, 220, 230, 240 also. This is out of control, and diastolic pressure above the 120 is syphilitic. So, out of control blood pressure और इस ब्लड प्रेशर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो तब कुछ भी हो सकता है, हेमोरेज हो सकता है, कुछ भी डिस्ट्रक्टिव बॉडी में हो सकता है. दैट्स व्हाई इट इज सिफिलिटिक. सिफिलिटिक हाइपरटेंशन व्हेन द pressure pulse pressure when the pulse pressure decreases, it's more syphilitic. Pulse pressure is the difference between the systolic and diastolic pressure reading. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एंड द डायस्टोलिक प्रेशर, इसके बीच में जो पल्स प्रेशर होता है, यू कैन सी हियर इन द सेकंड डायग्राम, पल्स प्रेशर. सो इट इज द प्रेशर between systolic and diastolic. Yes. So if resting BP is 128, pulse pressure is 4. मतलब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, पल्स प्रेशर होता है 40. When the pressure becomes syphilitic, it will pulse pressure will decrease. Low pulse pressure patients are more prone to myocardial infarct. Yes. जिनका पल्स प्रेशर लो होता है, मतलब देखो जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई होगा पल्स प्रेशर बिकम लो, और पल्स प्रेशर लो होगा तो मोस्टली हम देखते हैं कि जिनको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, दे may suffer from myocardial infarct. That's why the low blood pressure patients are more prone to myocardial infarction. So this is the soric, the psychotic, and the syphilitic hypertension. Yes. So soric blood pressure is always 150 by 80, 160 by 80, but it is transient, it is temporary. No pathology is there, only the mental anxiety, only the soric mental factors present there. And in psychotic, there is chronic mental anxieties, chronic mental depressions, chronic mental stress. Yes. So because of that, the psychotic blood pressure, it is constant, that is 140 by 90, 150 by 100, 160 by 100, and it may be due to the atherosclerotic changes in the arteries or indurations or thickening. And the syphilitic blood pressure, it is only depend on the pulse pressure. Yes.
So if suddenly the bp is suppressed, if suddenly the bp is suppressed, है ना, तो बहुत बार हम हाइपरटेंसिव ड्रग्स पेशेंट लेते हैं और बीपी सप्रेस हो जाता है। बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंसिव लोग कभी कभी दो दो तीन तीन टैबलेट्स उनको देते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर सप्रेस हो जाता है एंड सप्रेस बीपी विल ऑलवेज इंक्रीज द creatinine level. So creatinine, it is the reason for renal failure, rise of creatinine. So that's why the most of the hypertensive patient in last stages goes into the renal failure because of long suppression of BP, long treatment of hypertensive drugs. Yes. So in syphilitic cases like malignant hypertension, psychotic BP should reduce. Yes. In syphilitic case like malignant hypertension, systolic BP should reduce first. And as the gear shift from syphilis to psychosis, diastolic BP will transiently increase in psychosis. Remember, my friends, it is very, very important when you are treating the hypertensive patients or hypertension. So remember this point. If the blood pressure of patient is in syphilitic miasm, it is out of control, then after treatment, what should expect? So in syphilitic cases like malignant hypertension, systolic blood pressure should reduce first. मतलब वो 120 है तो it become 100 or 120 or 130 or 140, और जैसे ही ये 120 140 पे आता है तो डायस्टोलिक प्रेशर स्लाइटली राइज होगा. सो द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड रिड्यूस फर्स्ट एंड एज द गियर शिफ्ट फ्रॉम सिफिलिस टू साइकोसिस. ये क्यों चेंजेस जरूरी है? ये मस्ट है, ये ऐसा होना ही चाहिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर स्लाइटली बढ़ गया. दिस इज द गुड साइन according to Hering's law, because syphilitic comes down and psychosis slightly rise. Because the diastolic pressure is psychotic, so it will rise slightly. So suppose it was 120, then it becomes 130, but it is not a syphilitic, it is psychotic. So it is good for patient. So ऐसा अगर होता है तो it is good sign. So diastolic BP will transiently increase in psychosis. And remember, it is transient, temporary. This changes occur in the patient. Then later, diastolic BP will gradually reduce. फिर वो धीरे धीरे 120 से 110 आएगा, then 100, then 90 and 80. So then the latter diastolic BP will gradually reduce, and after that again patient comes on SORA. तो सिफिलिटिक से साइकोसिस में आया, साइकोसिस से अब जब सोरा में आएगा तो अगेन द सिस्टोलिक प्रेशर विल राइज. सो द सिस्टोलिक प्रेशर माइट इंक्रीज ट्रांसिएंटली. जो 130 140 पे आया था, अगेन इट विल इंक्रीज अप टू 160 170, but it is again the transient because it is so. So afterward, अगर सिस्टोलिक 170 हो गया तो तब जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 होना जरूरी है. अगर वो 80 है और अगर सिस्टोलिक 170 होगा तो फॉरगेट इट, इट इज नॉर्मल.
is good sign, that is the complete hearing law is following there. Yes. So this is the logic of homeopathy. This is the magic of homeopathy. Yes. और ये ओनली होम्योपैथी में ही देखने को मिलेगा और क्योर इसी वे से होना चाहिए और अगर ये फॉलो होता है तो ही योर रेमेडी इज राइट. अंडरस्टैंड दिस. अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन. तो हमने हाइपरटेंशन देखा, व्हाट इज हाइपरटेंशन. देन according to homeopathy, the soric hypertension, the psychotic and the syphilitic. Then now the types of hypertension. So there are two types of hypertension, primary and secondary. The high blood pressure that doesn't have known cause is called essential or primary hypertension, जिसे कोई कॉज नहीं है ना. हमारे पास मोस्टली ये पेशेंट आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया. जब आप पूछते हैं क्या हुआ, कुछ हुआ था, कुछ टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, एकदम ओके फाइन, अभी तो बहुत खुशी चल रही है, प्रोग्राम हुआ घर पे, ये हुआ वो हुआ, हम बहुत खुश है. फिर ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा, है ना. दैट ब्लड प्रेशर इज सॉरी ब्लड प्रेशर बिकॉज सम एंजाइटी, वरी, stress is present there and patient thinks all is right, all is happening good with me. So this is soric blood pressure. So hypertension, soric. And in contrast, secondary hypertension has a known cause, that is atherosclerosis, induration, narrowing of arteries, yes, stricture like this. So this is psychosis. And when the artery completely become blocked, then it is syphilitic. So the primary is always soric, secondary it will psychotic and syphilitic. Yes, we can see here the atherosclerosis changes, enlargement of heart, yes. So primary hypertension, secondary. Primary hypertension doesn't have any reason, but some anxiety worries are there, and secondary hypertension having atherosclerotic changes. Now the mechanism of hypertension. So mechanism of hypertension. Some part of body which is defective in pushing out the debris in the end process. Yes. Some part of the body which is defective in pushing out the debris in the end process of ATM, synthesis, needs extra blood pressure or extra pressure of blood. It is not extra quantity of blood. It's want only extra pressure in the artery. सिंपल वे है. अगर एक आदि कोई रबर ट्यूब है, आप देखो ट्रांसपेरेंट रबर ट्यूब लो, उसमें कुछ कचरा डाल दो जो अंदर ब्लॉक हो गया, डेब्रिस, दैट मीन्स द कचरा हियर, है ना. सो कचरा उसमें है.
अगर वो कचरा ट्यूब में से निकालना है तो यू वांट अ प्रेशर, आपको ऐसा फोर्स से पानी उसमें डालना पड़ेगा ताकि वो कचरा बाहर निकल जाए। सो वहां पे एक्स्ट्रा वाटर नहीं लग रहा आपको, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है उस कचरे को पुश करने के लिए। सो सम पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज डिफेक्टिव इन पुशिंग आउट द डेब्रिस इन द एंड प्रोसेस ऑफ एटीएम synthesis needs extra pressure of blood. It is not extra quantity of blood or extra speed of blood, only the pressure of flow of blood. If it is so, we will be having rapid or full bounding pulse. और ऐसे वक्त पल्स जो रहेंगे कैसे रहेंगे? फुल बाउंडिंग प्रेशर. But here in hypertension, we will not be having rapid pulse or full bounding pulse. Only the extra pressure is seen. Yes. So if we apply pressure on a pipe of flowing water, the water will thrown out. Water will thrown with the pressure, so the dirt will be clean. Simple logic है. ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है? मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब क्या? सोरा में क्या, साइकोसिस में क्या, इंसेटिलिटी में क्या? सोरा में बिकॉज ऑफ एंजाइटी जो न्यूरोटॉक्सिन्स वहां सीक्रेट हो रहे, दैट एक्ट्स ऑन द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज, और वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा, दैट्स व्हाई इट विल राइजेस द ब्लड प्रेशर. एंड दिस इज ओनली ऑफ सोरिक कॉज इन साइकोसिस. तो वहां पे कचरा जमा होना शुरू हो जाता, दैट इज द डेब्रिस, दैट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से अंदर से ट्यूब ब्लॉक हो रही है और वहां से ब्लड फ्लो कम हो रहा है, और जिस ऑर्गन को ब्लड जा रहा है उस ऑर्गन की डिमांड काफी बढ़ गई, उसे कम सप्लाई हो रहा है. दैट्स व्हाई ही सेंड द मैसेज, आई वांट ब्लड, एंड हार्ट विल पंप the blood forcefully. That's why it requires the force to flow the blood and it will raises the pressure. जो सिपिलिटिक होता है उसमें हो सकता है कंप्लीटली ब्लॉक होगा, दैट्स वाई बहुत हार्ट को प्रेशर देना पड़ रहा है, हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ रहे हैं, दैट्स वाई इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. यस. So now you can see here how the pressure increases, hypertension rises. So these are the organs that wants blood flow continuously, and if the blood flow becomes weak, then it will create pressure on heart, and heart will pump with extra efforts that increases the blood pressure in the arteries. Yes. So this is the same mechanism in cleaning the debris in the body as same in kidney cleaning also. But here, before hypertension, the body will go into different processes. And which are that processes? What are the debris which damage the kidney? Kidney को damage करने वाला कौन सा product है? That is serum creatinine. So to clean this creatinine debris, kidney takes the help of potassium to increase the area of kidney. अगर क्रिटेनिन, देखो जब हम किडनी का पेशेंट ट्रीट करेंगे, रिनल फेलियर का पेशेंट ट्रीट करेंगे, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बहुत फुल कंसंट्रेशन से सुनो. सीरम क्रिटेनिन, किडनी रिनल फेलियर में सीरम क्रिटेनिन बढ़ जाता है, और सीरम क्रिटेनिन क्यों बढ़ता है और उसे कैसे एक्सक्रीट किया जाता है, साफ किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है. तो सीरम क्रिटेनिन, टू क्लीन दिस सीरम क्रिटेनिन डेब्रिस, किडनी टेक्स द हेल्प ऑफ पोटेशियम.
इसीलिए देखो आप, जो भी रीनल फेल्योर पेशेंट्स होते हैं उनमें पोटेशियम लेवल कम हो जाता है, बिकॉज किडनी वांट्स इट. So to clean retention, kidney takes the help of potassium to increase the area of kidney. तो पोटेशियम किडनी को चाहिए, और पोटेशियम जब किडनी में डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है तो किडनी की साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. सो वी ऑल नो दैट पोटेशियम पुशेस द टिश्यूज एंड डायलेट्स द टिश्यू एरिया. सो इसीलिए हाइड्रोनेफ्रोसिस हमने हर किडनी रेन्यूअल पेशेंट्स में देखा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस. अब देखो, according to modern science, hydronephrosis, it is a danger stage, but this is the defensive mode of kidney, because kidney के लिए पॉइजन है, डेंजर है क्रिटेनिन, और किडनी ने वो अंडरस्टैंड कर लिया कि क्रिटेनिन यहाँ जमा हो रहा है, क्रिटेनिन बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये मेरे लिए, मेरी जान के लिए हानिकारक है, जिसके लिए किडनी उसे बाहर फेंकना चाहती है, एक्सक्रीट करना चाहती है, नॉर्मलाइज करना चाहती है. दैट्स व्हाई ही टेक्स द हेल्प ऑफ पोटेशियम. जैसे ही पोटेशियम आता है, पोटेशियम टिश्यूज को बढ़ा देता है. सो to clean, we all know that the potassium pushes the tissues and dilates the tissue area, और टिश्यू एरिया बढ़ गया तो वहां पे वाटर सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है, एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है. दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस. सो इनिशियली द किडनी साइज इंक्रीजेस एंड दिस पोटेशियम गेट exhausted and renal parenchyma become weak. And this is the condition of renal failure, renal parenchymal disease. So now kidney demands extra protein to strengthen the tissue. अब पोटेशियम की वजह से भी किडनी टिश्यूज एग्जॉस्ट हो गए. दैट्स व्हाई उनको एनर्जी देने के लिए किडनी वांट्स प्रोटीन. सो प्रोटीन विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अल्ब्यूमिन इन द बॉडी. तो जहां जहां अल्ब्यूमिन बॉडी में है, all organs release the albumin towards kidney. That's why in most of the cases, in renal failure cases, the urine contains albumin. So protein will be available in the form of albumin in the body. The storehouses for albumin is adrenal cortex, prostate, ovaries, testes, pancreas, tissues around the intestines and liver, and many other parts store albumin but in less quantity. So when kidneys start demanding extra protein, these also storehouses start releasing the albumin into circulation, and this will be carried to kidney and other parts of the body. Then these less albumin storing areas like adipose tissue in the thigh and ankle will also contribute by sucking extra serous fluid to push the albumin. When extra serous fluid is pulled, then blood becomes thick and the flow will be slowed down, causing edema on feet. So in renal failure cases, हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा जब हम किडनी डिजीज और हार्ट डिजीज पढ़ते थे. तो हार्ट डिजीज में भी एडिमा आता है और किडनी डिजीज में भी एडिमा आता है. बट ये कैसा, वाइस वर्सा होता है. किडनी के पेशेंट्स में एडिमा आता है फेस, और हार्ट के केसेस में एडिमा आता है लेग. तो जहां अब ये किडनी पेशेंट में, रिनल फेल्योर पेशेंट में एडिमा क्यों आ रहा है, इसकी पैथोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं. क्योंकि जैसे ही अल्ब्यूमिन
किडनी डिमांड करती है तो पूरे बॉडी के ऑर्गन से अल्ब्यूमिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रिलीज होने के लिए जो एंकल्स होते हैं, थाइज होते हैं, नी जॉइंट्स होते हैं, इनमें एक्स्ट्रा फ्लूइड भी उसके साथ रिलीज हो जाता है। दैट फ्लूइड कॉजेज द ब्लड थिकनिंग, और जब ब्लड थिकनिंग होता है तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली बिकम स्लो, और ये जो स्लो होगा दैट्स व्हाई इट saturates the water in the legs, in the tissues, and it will cause the edema. Yes. So these less albumin storing areas like adipose tissue in the thighs and the ankle will also contribute by sucking extra serous fluid to push the albumin. When extra serous fluid is pulled, then the blood becomes thick and the flow will slow down, causing edema of it. In the mean process, kidney takes the help of protein pushed to the parenchyma and try to strengthen the tissues, and extra albumin will be thrown out of the body in urine. That's why in renal failure cases, in the nephrotic syndrome, urine contains albumin, and this is syphilitic condition. Loss of albumin. Albumin gives the energy to the tissues, और इसका लॉस होना that means it is syphilitic. The process going towards the destruction. So we see albumin in the urine in cases of edema. This is stage 1 stage. This is stage 1 and stage 2 of kidney disease. Yes. जैसे अल्ब्यूमिन यूरिन में आता है, दिस इज द स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ऑफ किडनी डिजीज. Stage 1 is increased potassium level and edema is second stage. But even if the debris, there are 5 stages of renal failure. तो उसमें से ये जैसे पोटेशियम इंक्रीज होता है दैट इज द फर्स्ट स्टेज, यूरिन में अल्ब्यूमिन आता है दैट इज सेकंड स्टेज. बट इवन इफ द डेब्रिस आर नॉट cleared, then kidney demands extra pressure in blood flow, so the blood pressure increases. But the pressure will be exerted equally on parts of the body. There is a chance of hemorrhage in the brain. जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स की डिमांड ही उतनी है, उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, तो हार्ट को प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और जब वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा तो सभी ऑर्गन का प्रेशर बढ़ेगा, है ना. देन हम बोलते हैं नस फट गई, ब्रेन हेमोरेज. But the pressure will be exerted equally on the other parts of the body. There is a chance of hemorrhage in the brain. So, doctor give hypertensive medicines to reduce the pressure. अब देखो कितनी कमाल की बात है. ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? दिस इज अगेन द डिफेंस मैकेनिज्म. क्योंकि वो तो कोशिश कर रहा है कि अदर ऑर्गन्स को ब्लड मिलना चाहिए, इसलिए प्रेशर बढ़ रहा है. लेकिन उसमें अगर हाइपरटेंसिव ड्रग्स लिए और उस प्रेशर को डाउन कर दिया, तो जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड न्यूट्रिशन की डिमांड हो रही है वो कंप्लीट नहीं हो रही आफ्टर द ड्रग्स, वो कंप्लीट होगी नहीं. अगर वो कंप्लीट नहीं होगी तो अगेन देयर इज नेक्रोसिस, एट्रोफी ऑफ दैट ऑर्गन, है ना. अगर वो पूरी हो गई तो वो ऑर्गन से, नहीं हुई तो वहां नेक्रोसिस होने वाला है, एट्रोफी होने वाली है. मतलब आप ड्रग लो तो भी डेंजर, नहीं लो तो भी डेंजर. सो kidney further deteriorates and kidney size will decrease.
क्योंकि किडनी को ब्लड फ्लो मिल नहीं रहा, दैट्स व्हाई किडनी बिकम डिक्रीज। न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा, तो अल्टीमेटली वहां एट्रोफी होना ही है। हमारे महाराष्ट्र में, स्पेशली विदर्भ, एक एरिया ऐसा है, दैट इज द मेड़घाट फॉरेस्ट। उसमें बहुत आदिवासी लोग रहते हैं, और वहां पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशंस कितने सारे बच्चों के डेथ्स होते हैं। उपास मार जिसको बोलते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन। तो दिस इज एट्रोफी। उनकी हाइट नहीं बढ़ती, बच्चे बढ़ते नहीं, बड़े नहीं होते, दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। उसी यही सेम प्रोसेस किडनी के लिए बॉडी में हो रही है। किडनी को चाहिए ब्लड, न्यूट्रिशन, और वो डिमांड पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ब्लड प्रेशर, जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, हाइपरटेंसिव टैबलेट स्टार्ट हो गए। और हाइपरटेंसिव टैबलेट गोली लेने के बाद वो गोली अपना काम करती है, हार्ट को बोलते हैं भाई शांति रख, इतना प्रेशर क्रिएट मत कर, तू डेंजर में आएगा। तो हार्ट को बचाने के लिए पेशेंट गोज इनटू द रीनल फेलियर, बिकॉज रीनल डोंट गेट द न्यूट्रिशन। So kidney can self-protect without taking the help of pressure or bloods to clean, but debris are very strong. They gradually eat away the tissues and its function. Yes. That's why the size of kidney becomes so the person lands into renal failure, kidney failure. But if your GCS, but if your GCS is right, your selection is right, that should strengthen the complete body as well as the diseased tissue in kidney. और इस GCS के लिए जरूरी है approach, understanding the conflict, understanding about his reaction, his disposition. And even if the patient is on hypertension, anti-hypertensive medicine, his BP will increase, and that it self says that your remedy is right and withdraw the BP medicine. देखो, आपने मेडिसिन दे दिया, होम्योपैथिक मेडिसिन जीसीएस पेशेंट को दिया, और जीसीएस देने के बाद क्या चेंजेस पेशेंट में होने चाहिए? तो even if the patient is on anti-hypertensive medicine, एंटी-हाइपरटेंसिव टैबलेट्स लेने के बाद भी बीपी राइज ही हो रहा है, दैट मीन्स योर रेमेडी इज राइट। Yes, sir. एंड विड्रॉ द बीपी मेडिसिन। बहुत ही अच्छा है, खाली इसे बहुत बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने के बाद डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ना ही चाहिए, वो बढ़ रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट डेंजर, इट इज साइकोटिक ब्लड प्रेशर। और जैसे ही सिस्टोलिक कम होता है, साइकोटिक बढ़ता है, देन साइकोटिक कम होता है, अगेन सिस्टोलिक बढ़ता है, अगेन इट इज गुड साइन। उसी तरह से यहाँ पे है,
जब भी रिनल फेलियर का पेशेंट आता है और हम उसे मेडिसिन देते हैं तो उसमें अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पेशेंट ब्लड प्रेशर के मेडिसिन लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दैट इज गुड साइन। लेकिन ऐसे इसमें आप बीपी की टैबलेट मत बढ़ाओ, उसके मिलीग्राम मत बढ़ाओ, तो उसे और कम करो। This BP will increase, and that itself says that your remedy is right, and withdraw the BP medicine and see how fast the result is seen. There will increase BP first, followed by increase albumin in urine. देखो स्टेप बाय स्टेप, ये ध्यान में रखो, ये बिल्कुल माइंड में फिट करके रखो कि अगर रिनल फेलियर का पेशेंट आता है, उसको ऑलरेडी ही इज ऑन द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड यू हैव प्रिस्क्राइब द होम्योपैथिक GCS, then in first follow his blood pressure will rise. Afterward, increase albumin in urine. Increase albumin in urine, it is danger, but here it is good. Why? So creatinine comes down, क्योंकि बीपी से भी बड़ा है अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन से भी बड़ा है क्रिटेनिन, क्योंकि क्रिटेनिन इट इज पॉइजन फॉर किडनी। सो क्रिटेनिन कम्स डाउन। अगर क्रिटेनिन को कम करना है तो थोड़ा सा साइकोसिस बढ़ना चाहिए, अल्ब्यूमिन, हाइपरटेंशन, यस। सो creatinine comes down and potassium increase in circulation, and that is followed by potassium भी थोड़ा सा बढ़ेगा, टेम्पररी इडिमा, थोड़ा सा लेग्स पे इडिमा आएगा, बॉडी पे इडिमा आएगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट आफ्टरवर्ड। जैसे ही टेम्पररी इडिमा थोड़ा इंक्रीज होता है तो यूरिन आउटपुट मस्ट इंक्रीज। अगर यूरिन आउटपुट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ गुड साइन। ये क्लियर कट है कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ गया, मतलब बॉडी में के टॉक्सिन्स एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ गया मतलब जितना भी अंदर कचरा भरे हुआ है, टॉक्सिन्स है, जो भी पॉइजन है, वो टोटल एक्सक्रीट होने वाला है। दैट्स व्हाई किडनी इंक्रीज हिज आउटपुट, और किडनी यूरिन आउटपुट बढ़ गया मतलब किडनी फंक्शन स्टार्ट। सो glow in the face and finally the cure takes place. जैसे यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो जितनी भी टॉक्सिसिटी बॉडी में भरी हुई है, जमा हो गई टॉक्सिसिटी इन आर्टरीज, इन किडनीज, इन अदर ऑर्गन, सब निकल रही है एंड द स्किन बिकम, जो किडनी फेलियर के पेशेंट में स्किन आपने देखा होगा कैसी हो जाती है, पेल, है ना, डल, यस सर। एकदम डर्टी लुक, और ऐसा क्या बोलते उसको, हेयर्स बिल्कुल ऐसे लस्टरलेस हो जाते, इट विल शाइनिंग आफ्टर यूरिन आउटपुट। एंड ये हुआ तो समझ लेना 100% वहां क्योर होने ही वाला है। फाइनली द क्योर टेक प्लेस। सो यहां तक किसको समझ में आया? आप ये जो सब हो रहा है ना, ये अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ है, ये हेरिंग्स लॉ ही है, इसके जैसा ही होना चाहिए। ये इस अकॉर्डिंग टू दिस, कि पहले ये गया, बाद में ये आया, उसके बाद ये गया, फिर ये आया, ये ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ही ब्लड प्रेशर आप GCS देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर के बाद यूरिन में अल्ब्यूमिन दिखेगा, अल्ब्यूमिन के बाद क्रिटेनिन कम, आप ब्लड टेस्ट में क्रिटेनिन लेवल कम हुई हुई दिखेंगी, उसके बाद थोड़ा सा यूरिन में ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ी हुई दिखेंगी, पोटेशियम लेवल बढ़ी हुई देखने के बाद टेम्पररी इडिमा देखेगा पेशेंट में, और इडिमा क्योंकि पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम
कि टेंडेंसी है कि वाटर को एक्युमुलेट करके रखना है, दैट्स व्हाई एडिमा इंक्रीज. सो आफ्टरवर्ड यूरिन आउटपुट विल इंक्रीज. यस. और जैसे यूरिन आउटपुट बढ़ गया, पेशेंट का चेहरा पे हमेशा ध्यान रखना, उसके स्किन पे ध्यान रखना, आपको शाइनिंग दिखेगा, पेशेंट के एक्सप्रेशन बहुत ही आपको एकदम एक्सप्रेसिव देखेंगे, आपके बहुत ही क्यूट से एक्सप्रेशन दिखेंगे, सोरिक एक्सप्रेशन दिखेंगे. दैट इज द पेशेंट कमिंग फ्रॉम सिफिलिटिक टू साइकोटिक टू सोरा. यस. आप देख सकते द ऑर्डर ऑफ हीलिंग, यहाँ पे डायग्राम दिया है, उसमें आप देख सकते हैं. यस. सो यहां तक कितना समझा, क्या क्या समझा? यस. सर वो ब्लड प्रेशर के लिए पहले सिस्टोलिक बढ़ेगा तो फिर बाद में डायस्टोलिक बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या सर? अगेन सिस्टोलिक. जैसे ही डायस्टोलिक कम हो जाता है, जैसे कि पहले डायस्टोलिक 100 था या फिर 110 था, देन मेडिसिन के बाद सिस्टोलिक कम हुआ तो डायस्टोलिक 110 से 120 हो गया, देन 120 से अगेन इट कम्स ऑन 80. afterward the systolic pressure becomes 120 to 140 150. This is soric blood pressure, and afterward it will become completely normal 120 to 80. Yes. ओके सर. तो यहां तक सबको ओके? नो डाउट, नो क्वेरी, नो प्रॉब्लम? Yes, sir. सब एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया? Very nice, sir. यस. सो तो आगे चलते हैं. यस. Now the homeopathic approach. What is the layer? Layer of hypertension. It is the fourth layer disease. Fourth layer, organ of mesoderm. So mesoderm है, मतलब वहां सोरा भी है, साइकोसिस भी है, सिफिलिस भी है. So hypertension, it is purely psychosis, है ना? So excess psychosis is hypertension, and less psychosis it is hypotension. Okay. So कल से हम कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हार्ट. तो अलग अलग पार्ट के कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, जितने भी हार्ट के पार्ट है सबके कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे. ओके. सो हाइपरटेंशन, इट इज द मायोकार्डियम, वेंट्रिकुलर हार्ट मसल्स डिजीज. यस. सो ये सेशंस मिस नहीं करना, कोई एब्सेंट नहीं रहना. बहुत बढ़िया, हर पार्ट का कॉन्फ्लिक्ट बताऊंगा, उससे रिलेटेड डिजीज बताऊंगा. यस. और बहुत काम के ये सेशंस है. एटलीस्ट खुद के फैमिली के, खुद के रिलेटिव्स के, खुद के फ्रेंड्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है. अगर आप पेशेंट भी नहीं ट्रीट करना चाहते तो एटलीस्ट आपको इन चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. हेलो सर. यस. सर, अगर किसी पेशेंट का सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ही बढ़ा हुआ है और हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेने के बाद उसका सिस्टोलिक तो कम हो जाता है मगर डायस्टोलिक बढ़ा हुआ ही रहता है, तो फिर? दिस इज साइकोटिक ब्लड प्रेशर. ओके सर. तो सर उसका कॉन्फ्लिक्ट भी पता, मतलब जब से उसको ब्लड प्रेशर आया है उसके पहले उसके साथ कुछ इंसिडेंस हुआ था, तो क्या उसके कॉन्फ्लिक्ट जानने के बाद कॉज हमको पता चल गया तो उसके बाद हमको उसका रिएक्शन लेना है या उस समय फीलिंग्स क्या आई देन? रिएक्शन तो हर केस में इंपॉर्टेंट है, हर केस में. ओके सर.
और यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं, अगर वहां पे माइजम ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके सर। राइट, माइजम ओके। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वहां पे आपको पॉजिटिव फैक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं। आप अकॉर्डिंग टू माइजम उसकी रिएक्शन और डिस्पोजिशन ले लो, फिनिश। ओके सर। तो सर जब हम ट्रीट करेंगे तो जैसे वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहे हैं और सिस्टोलिक कम हो जाता है मगर डायस्टोलिक उतना ही बढ़ा हुआ ही रहता है उनका, तो जब हम अपनी मेडिसिन देंगे तो वो उनकी जो मेडिसिन है एलोपैथिक वो बंद करवा के फिर हम अपनी स्टार्ट करेंगे? उसे आपको टैपर करना है, ऑल ऑफ सडन उसे बंद नहीं करना, स्टॉप नहीं करना, ओके सर। आप उसे टैपर कीजिए। ओके सर, हेलो सर, मतलब यस। अभी आपने बताया कि मायाजम वहां पे प्रेजेंट है, मतलब साइकोटिक मायाजम या सोरिक मायाजम प्रेजेंट है देखो तो प्रेशर, पॉजिटिव अब फैक्टर इन्होंने जो इम्पोर्टेंट नहीं बताया है। था, इस मैडम ने जो केस बताया वो दैट वाज साइकोटिक यस, ब्लड प्रेशर, यस सर, यस सर। है ना। तो साइकोटिक हाँ, से वो मतलब जो सिस्टोलिक था वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन डायस्टोलिक कम नहीं हो रहा है। यस, दैट मींस ही इज इन कांस्टेंट, ही इज इन साइकोसिस माइजम, यस। राइट। सेकेंडरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। जब जब वो स्टार्ट हुआ उनको, आपको तब का देखना है कि उस टाइम पे भी ही वाज इन साइकोसिस। यस, अगर वो उस टाइम पे भी साइकोसिस में था, तब आपको वहां पे पॉजिटिव फैक्टर नहीं लेना है, ओनली टेक द रिएक्शन एंड डिस्पोजिशन अकॉर्डिंग टू माइजम। यस सर, थैंक यू। सो ओके, होप आज सर, का सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया, सर, राइट। यस। यस सर। हेलो हाँ बोलिए। सर, इसमें अभी रीनल हम लोग आगे देखेंगे या पोटेंसी का, पोटेंसी रिपीटेशन, रेमेडी रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है, सिंगल डोज पे ही रहे? हम हार्ट का देख रहे हैं, ओनली मैंने हाँ, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बताया इसमें, दैट इज यस सर, रीनल फेलियर। और ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? बिकॉज आर्टरीज ऑफ किडनी हैविंग सम ब्लॉकेज, बिकॉज ऑफ एनी डेब्रिस, किसी यस सर, बात की वजह से वहां कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, दैट्स व्हाई किडनी गेट्स लेस ब्लड सप्लाई, और उसका परिणाम हार्ट पे हो रहा है। हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट लेके ब्लड फ्लो, ब्लड का प्रेशर बढ़ा रहा है, ब्लड फ्लो नहीं बढ़ना है, प्रेशर से ब्लड अगर वो फ्लो करेगा तो ही ब्लड वहां तक पहुंचेगा, है ना। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की रीजन मैंने यहां बताया। ओके सर। सडन चेंज इन बीपी अगर होता है तो हमें पेशेंट का, Correct. हेलो, नहीं है पेशेंट साइकोटिक यानी जैसे चल के आए तो बीपी बढ़ा था, फिर थोड़ी देर लेटने को बोले तो नॉर्मल हो गया, ये अगर Sorry, उनका 180, transient blood pressure, नहीं it is so वन एटी हंड्रेड 180 100 तक के रहता है yes. फ्लक्चुएशन इतना। तो अगर वो ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, कुछ देर के लिए आता है, या फिर ब्लड प्रेशर हाई और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं, दिस इज सोरा। यस 180 तक के भी सो रहा ही रहेगा, यस। 180 100 110 180 100, 180 100 बाय या 100 110। और 110 अगर वो हाँ, आज ही बढ़ा है तो इट इज नहीं सोरा। उसका हमेशा ही ऐसा चेक हमेशा करने जाओ होता तो है तो सेम इट इज होता है। साइकोटिक ब्लड प्रेशर। सर वो जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन रहता है हमेशा बढ़ के रहता सब लेने पर, वो भी सॉरिक रहता है क्या कि साइकोटिक? मैलिग्नेंट अच्छा है कि बिनाइन अच्छा है? नहीं। नहीं सर। फिर मैलिग्नेंट आपने ही तो बताया डेंजर है, तो डेंजर चीजें क्या होती हैं? ओके सर। यस। सर ये आप जो भी बता रहे थे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है तो वो सोरिक, तो ऐसा मोस्टली होता है, लोगों को मालूम भी नहीं होता है बढ़ा हुआ होता है, जी, एक्सीडेंटली मालूम पड़ता है, ये तो सोरा वहाँ भी नो हो नीड। सकता है अगर वो टेम्पररी है तो, लेकिन
ये कांस्टेंट है बहुत दिन से विदाउट एनी सिम्टम, दैट मीन्स हाइडिंग है, छुपे हुआ है, इट इज साइकोटिक। अच्छा, यस। तो साइकोटिक है, हाँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम आगे का देखेंगे, राइट? थैंक यू सर। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। बाय बाय।